एक्चुअली लास्ट दिन है हम सब तीनों का साथ में एंड इट्स ए इम्पॉर्टेंट सीन. हमारी फिल्म जो है वो यूएई में बेस्ड है तो उसका ही सेट लगाया गया है महबूब में एंड अकॉर्डिंग टू रोहित्स विजन एक बहुत ही खुफिया सीन हम लोग शूट कर रहे हैं जिसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं अगर ये हमें परमिशन दे तो. एक्चुअली एक सेक्शन है पिक्चर मिडिल ईस्ट में बेस्ड है. तो एक अंडरग्राउंड बंकर है जहाँ इनके कैरेक्टर कबीर और जुनैद घुस जाते हैं किसी को ढूंढने और फिर इधर गाना होता है जो हम लास्ट 4 दिन के लिए शूट कर रही थी जहाँ जैकलीन वाज डांसिंग वेरी वंडरफुली एंड दैट्स व्हाट इट इज. Wonderful. It actually leads up to a lot of action. And it's quite an intense scene that we're actually shooting today on the last day of our film. And it's fun. I mean, like the entire film has been that. There's been like a lot of thrills, action, intensity. It's like on the go. It's fast paced. And yeah, I'm just glad that we were kind of able to all end together. बचपन में मैं काफ़ी पिटता था इनसे एंड सो आई थिंक जो भड़ास ये बचपन में नहीं निकाल पाए आई थिंक ये पिक्चर में मुझे कास्ट करके वो पिक्चर में निकाल रहे हैं. इट्स ऑनेस्टली बीन अ वेरी चैलेंजिंग फिल्म बिकॉज there's a lot of action in the film. John and me have been through some really daredevil stunts and I'm actually very thankful that I have a partner, a co-actor like John because when you're doing action, when you're risking your life for these things, you need someone who has your back and honestly, honest to God, every stunt that was there, first John would try it. Then he would be like, okay, you do it. Even if he was not in the stunt, even if it was any kind of rigging or any type of stunt, he would go through it first and then he would be like, okay, Varun, this is the way you do it. And according to a hero, even the looks you have to give. So I had a lot of support from him. So I felt like I didn't have one, but I had 2 brothers on the set. You know, coming together on a film like this is, you know, where you have probably the most powerful individual producer like Sajid Nadiadwala. You have, you know, probably the youngest, most popular actor in Varun. And, you know, you have someone so beautiful and so popular. In fact, her following is unparalleled in Jacqueline. And she's really popular amongst the youth. And you have someone like this boy, you know, who I've done Desi Boys with him. And I can speak for him and I can say you'll see him after Dishoom. He's going to be a powerhouse. So I think when you have a combination like that and when we are all working together as a unit, the results are going to be fantastic. And I think we work, like Varun and me, our relationship off the set is even more comfortable sometimes than when it is on screen. And that really shows. And just the relationship that Rohit and all of us share is absolutely brilliant. So it's very seamless. This whole film is very seamless. Sajid and I have worked together before and all credit to him, you know, for mounting a film like this. Yeah. I'm a producer, I know how tough it is and he's done such a fantastic job and there's so many things you have to deal with and I think he's done everything so beautifully and he still, trust me, sits here with a smiling face. It's damn tough. No, I think that's part and parcel of shooting. It was just एक incident था जो थोड़ा सा जब where I kind of, I mean they say I Passed out. But I felt it was for just a few seconds. But I think Rohit says it was for. No, there were some extreme conditions. I think that you guys had to shoot in weather conditions and action scenes and Varun did pass out, by the way. I fainted for a bit. But the funny thing is this कि जब ये मेरे साथ हुआ था, that was the only day I was not shooting with John. That was the only action sequence I was doing alone, and that's the time I actually went. Actually, whenever John was around, he always, he didn't let a stunt happen before he saw the safety rigging. और वो सब check करते थे, all the ropes, the steel harnesses, and only then we used to get onto a chopper or a speed boat or a fast car. क्योंकि इन्होंने तो बहुत बोन्स तोड़े लास्ट 15 साल में. But I think John और मैंने अपनी eyesight साथ में खोई थी इस पिक्चर के लिए because of the chlorine. We had an underwater shoot where हम लोग सुबह 7 बजे से I think तकरीबन 7 बजे इवनिंग तक शूट कर रहे थे. And I remember it was इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का सेमीफाइनल था. तो हम लोग सब एक्साइटेड थे कि जाके देखिए कब शूटिंग खत्म होगी, कब शूटिंग खत्म होगी. पर जब शूटिंग खत्म हुई तो हम लोग देखने के लायक नहीं थे. तो क्लोरीन सब हेज दिखाई दे रहा था. Locations you could say, but besides that, no parallels from a Bond movie. It's actually a lot like a buddy cop film.
So it harks back to a genre of Lethal Weapon, Andar Bahar, Main Khiladi Tu Anadi, Bad Boys. So that's the world the film's based in, and that's no, not too much slapstick comedy. There's a lot of humor. There's a lot of humor. Both the characters are very different, and but the film has a lot of light-hearted humor as well, packed with the action. आपने रॉकी हैंडसम के समय बताया था कि डिशूम का जो स्टंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये चीज़ कही थी। बागी में हमने देखा है कि वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल का है। इवन कमांडो में भी वो कुछ अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये किस लेवल तक जाएगा? पता नहीं, अभी फोर्स 2 में और कुछ करूँगा मैं। लेकिन ये कंपटीशन ये नहीं, कंपटीशन नहीं है, अच्छा लगता है। अगर कोई कुछ अलग करे तो अच्छा ही लगता है। हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कम्पीट नहीं कर रहे। एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द ऑडियंस टू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स। तो स्टंट से ज़्यादा अगर फिल्म्स की बात करें तो फिल्म शुड बी अ लॉट मोर एंटरटेनिंग। आई थिंक जो यूएसपी होगी इस एक्शन की कि हर स्टंट जो है वो मैंने और जॉन ने खुद किया है, एंड इसमें कोई स्टंट डबल यूज़ नहीं हुआ है, इसमें कोई फेस रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, इसमें कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है। वी जेन्युइनली डन एवरीथिंग टुगेदर, एंड आई होप वी कैन रिलीज द मेकिंग ऑफ द एक्शन। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कितने डरे हुए हैं। हम लोग मतलब मैं कितना डरा हुआ था, बट उस वक्त यू रियली कम टू नो व्हाट गोज बिहाइंड stunt like that, because and मेरे हिसाब से the physical fitness on Dishoom is off the charts. I think when you have a man like John Abraham, you have someone like Jacqueline Fernandez, मतलब कुछ भी हो जाए जिम तो जाना ही पड़ेगा, वरना कल शूटिंग पे आप कौन सा मुंह लेके जाओगे वो पता नहीं आपको। तो इतने फिट लोग होते हैं ये फिल्म पे। आई थिंक शी वुड बी डूइंग Zumba on one side, insanity workout, John is working on another side। हम लोग रंग्स में ही थे दोनों वालों। तो आई जस्ट फील दिस इज साजिद से मैंने यही कहा फर्स्ट टाइम व्हेन वी साजिद करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पहली बार व्हेन आई read the script I only told Sajid there is going to be a Dishoom 8. This is the youngest this is a younger franchise because of Varun and Jacqueline। क्या है ना कि ये franchise बहुत young है, and I think this franchise will keep going on, and it's a very, हम लोग अक्सर franchise बनाते हैं franchise बनाने के लिए। I think this is a very franchisable film, and it's going to be, according to me, and we were discussing, I think it's going to be the biggest franchise India has ever seen। I think Rohit will agree with मैं क्या कहने वाला हूँ। मेरे पिताजी को सिर्फ he is concerned with only a certain section of people, and those are called the audience। बाकी सब he is not interested in, क्योंकि जब हम लोग फिल्म बनाते हैं वो लोग ही पैसा दे के अंदर जाते हैं, तो and he believes in that, in his cinema is that you cannot cheat the audience। आप जो भी करो, आप मतलब भाई बहन साथ में आ रहे हैं, भाई बाप आ रहे हैं या बाप बेटा आ रहे हैं, डजंट मैटर, यू शुड नॉट चीट द ऑडियंस। एंड आई थिंक रोहित हैज़ दैट मच ऑनेस्टी, आई फील एज अ फिल्म मेकर, दैट ही इज ऑल्सो कीपिंग द ऑडियंस इन माइंड। ही डजंट केयर when we are on shoot that I'm his brother on the other side, or John who's he's so close to on the side। What matters is that हम लोग ये जो फिल्म बना रहे हैं, हम लोग ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, एक स्टोरी है जो हमारे देश के बहुत करीब है। It's I think the story is what made me want to do the film also, and I'm very happy obviously as a brother that this is my brother's next film, and I'm also happier that I can be a part of it in some way। बिफोर वी गो, आप लोगों ने पूछा था हम लोग क्या सीन शूट करते हैं। सीन तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर उसका फिल्म का एक डायलॉग बोल सकता हूँ एक्सप्लेनेशन देने के लिए। इसके बाद मुझे बहुत मार पड़ने वाली है, बट इम्प्रॉम्प्टू बोल दूंगा। ये अरबियों का डोंगरी है, या शान पर तो सिर्फ शानों पे जचती है, पुलिस वालों पे नहीं।